Good morning, my dear students. Welcome to Conceptum classes. Let me remind you first, if you are the first time viewer of this channel, please don't forget to subscribe it. Today, in this session, we will discuss exercise 3.2 of trigonometric functions, 11th class mathematics. Question first I have written here. It is find the value of other 5 trigonometric functions. One function is given. You have to find the value of other 5 trigonometric functions. The first is cos x is equal to minus 1 by 2. The first is cos x is equal to minus 1 by 2. And it states here that x lies in third quadrant. And x lies in third quadrant. So if we draw quadrants here, this is first quadrant, this is second, this is third, and this is fourth. And if you remember, I have already told you that in first quadrant all functions are negative or positive. In second quadrant sine and cosec are positive, others are negative. And if you remember, I have told you after school to college, all positive, sine and cosec positive, tan and cot positive, and here cos and sec are positive. This I have told you already. We have discussed this. Now cos x lies in the third quadrant. That means it lies here in the third quadrant, this quadrant. If this is value of x, this is lies in the third quadrant. That means here tan and cot, tan x and cot x will be positive. All others will be negative. Now we know that. We have already discussed some trigonometric identities earlier in class 10th. We will use those identities here. Let me write those identities here. We know that sine square x plus cos square x is equal to 1. And we know that sec square x minus tan square x is equal to 1. And cosec square x minus cot square x is equal to 1. These three identities we will use here. Here we have been given cos x is minus 1 by 2. We have to find other 5 trigonometric functions. That means we will use this identity, sine square x plus cos square x is equal to 1. So use the identity sine square x plus cos square x is equal to 1. Sine square x plus cos square x. Cos x, value of cos x is given minus 1 by 2. It is minus 1 by 2 whole square is equal to 1. It means that sine square x plus minus 1 by 2 whole square means 1 by 4 is equal to 1. It means that sine square x is equal to 1 minus 1 by 4. It means sine square x is equal to, you take 4 as LCM here, it is 4 minus 1. It means sine square x is equal to 3 by 4. It means sine x is equal to root 3 by root 4. Root 4 means 2. Root 3 by 2. But x lies in the third quadrant. X lies in the third quadrant. And in the third quadrant, tan and cot, only tan function and cot function are positive. Others are negative. So therefore, we will write here sine x is equal to minus root 3 by 2. Because it lies in the third quadrant. And in third quadrant, सिर्फ third quadrant में tan और cot positive होंगे, बाकी negative होंगे. तो ये sin है, इसलिए ये होगा minus 3 by 2. This is sin x. Now we know that cosec is the inverse of sine. So that means we will write here cosec x is equal to minus 2 by root 3 minus inverse of sin x, यानी 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, it's minus 2 by root 3. This is cosec x. Now sin x is, cos x is given. We know that sec x
is inverse of cos x. Is inverse of cos. That means sec x is equal to minus 2 by 1. This is sec x. Now tan x. Tan x we know is sin x divided by cos x. That means tan x is equal to sin x. Sin x minus root 3 by 2 divided by cos x minus 1 by 2. It means tan x is equal to minus root 3 by 2 into minus 2 by 1. 2 and 2 cancels. It means that tan x is equal to, it is root 3. And cot x, inverse of tan x, it is 1 by root 3. So these are the other 5 trigonometric functions we have calculated here. I hope you understand. You pause the video and note it down. Let's move to second part. Second part is sin x is equal to 3 by 5. Sin x is equal to 3 by 5, and here x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. Second quadrant. This is the second quadrant. Here sine and cosec. In this quadrant, sine and cosec are positive, others are negative. Now sin x is given. We have to find other trigonometric functions. We will again use the same sine square x plus cos square is equal to 1. Now use the identity sine square x plus cos square x is equal to 1. Sine is given. It means 3 by 5 whole square plus cos square x is equal to 1, or 9 by 25. 3 by 5 whole square means 9 by 25 plus cos square x is equal to 1. It means that cos square x is equal to 1 minus 9 by 25. Or we have cos square x, take 25 as LCM. It is 25 minus 9. It means cos square x is equal to 16 by 25. It means that cos x is equal to root of 16 by 25. It means cos x is equal to root of 4 by 5 whole square. Square and root cancels. It means cos x is equal to 4 by 5. But x lies in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. तो बताइए ये cos x क्या होगा फिर इधर? It will be minus 4 by 5. Cos x will be minus 4 by 5. Now let us move to tan x. Now tan x is sin x divided by cos x. It means tan x is equal to sin is 3 by 5 divided by cos. Cos is now minus 4 by 5. So it will be 3 by 5 into minus 5 by 4. 5 and 5 cancels. So it is minus 3 by 4. So tan is minus 3 by 4. Now cot x. Cot is the inverse of tan. So it is minus 4 by 3. Sec x is the inverse of cos. Cos is minus 4 by 5. Sec will be minus 5 by 4. And cosec x, it is the inverse of sine. Sine is 5 by 3. 3 by 5. Then cosec will be 5 by 3. I may write it down here that tan x is always equal to sine x by cos x. Cot x is 1 by tan x. Sec x is 1 by cos x. And cosec x is 1 by sine x. Pause the video and note it down.
Let's move to next question. Question 3. The third question is cot x is equal to 3 by 4. Cot x is equal to 3 by 4 and x lies in fourth quadrant. X lies in third quadrant. X lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में फिर मैं इस क्वाड्रेंट को बताता हूं। तो ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इसमें हमारा tan और cot x पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan x और cot x पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। Now cot x is equal to 3 by 4 and x lies in the third quadrant. Let me use this identity here. Cosec square x minus cot square x is equal to 1. I will find out cosec x. जब cosec x मुझे निकला तो मुझे sin x निकलेगा, तो sin से मैं cos निकालूंगा। जब cos और sin मुझे पता होंगे तो बाकी सब खुद निकलते हैं। Now cot x is equal to 3 by 4. Using identity, cosec square x minus cot square x is equal to 1. Cot I know, cosec I will find out. So it is cosec square x minus cot. Cot is 3 by 4. Means 3 by 4 whole square is equal to 1. So it is cosec square x minus 9 by 16 is equal to 1. It means cosec square x is equal to 1 plus transpose 9 by 16. It will be plus 9 by 16. It means cosec square x is equal to, it is 16 LCM, 16 plus 9 means that cosec square x is equal to 25 by 16. It means cosec x is equal to root of 25 by 16. It means cosec x is equal to root of 5 by 4 whole square. Square and root cancels. So cosec x is equal to 5 by 4. But it lies in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए मैं इसको यहाँ नेगेटिव लेता हूँ। So that means cosec x is equal to minus 5 by 4. एक्चुअली क्या होता है यहाँ, जब मैं यहाँ लेता हूँ 5 by 4 का होल स्क्वायर, I can take plus minus. I can take plus minus here. Then plus value I reject and minus value remains there because it lies in the third quadrant. तो cosec x मुझे आया, अब मैं निकालूंगा sin x. Now sin x is 1 by cosec x. It means sin x is equal to 1 by minus 5 by 4. It means sin x is equal to minus 4 by 5. इसका उल्टा कर दो तो 4 by 5 निकला sin. Now sin I know, cosec I know, cot I know. Now cot x, now tan x, it will be inverse of cot x. It is 1 by cot x. tan x हो गया, cot का उल्टा कर दो, it is 4 by 3. Now let us find cos and sec. Now we know sin, we can find cos. Use the identity. Sin square x plus cos square x is equal to 1. Sin square x, what is sin x? It's minus 4 by 5. It is minus 4 by 5 whole square plus cos square x is equal to 1. So it means 16 by 25 plus cos square x is equal to 1. When you pause the video and note it down, let me rub this part. Now 16 by 25 plus cos square x is equal to 1. It means cos square x is equal to 1 minus
16 by 25, or we have cos square x is equal to, take 25 as LCM, 25 ones are 25 minus 16, it means cos square x is equal to 9 by 25. It means cos x is equal to square root of 9 by 25. It means cos x is equal to plus minus root of 3 by 5 का whole square. Square and root cancels. So cos x is equal to, take minus sign because x lies in the third quadrant. tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ नेगेटिव साइन लूंगा. So cos x is equal to minus 3 by 5, and sec x is the inverse of cos x. It is minus 5 by 3. This is cos and this is sec. So all 5 trigonometric ratios are found. Pause the video and rub it down. Let's move to question number 4. Fourth question is, fourth part is sec x is equal to 13 by 5 when x lies in fourth quadrant. X lies in fourth quadrant. Now, sec x is equal to 13 by 5. X lies in fourth quadrant. This is the fourth quadrant. Here cos and sec are positive, others are negative. Now sec x 13 by 5. Sec x is 13 by 5. I can find cos x. Now cos x is equal to inverse of sec x, यानी sec x का उल्टा, it is 5 by 13. इसका उल्टा कर दो तो cos x निकलेगा. अब मुझे cos x है तो मैं sin x निकालता हूँ. Using identity, sin square x plus cos square x is equal to 1. It is sin square x plus cos square x. Cos is 5 by 13. It is 5 by 13 whole square is equal to 1. It means sin square x plus 25 by 13 square is 169 is equal to 1. Sin square x is equal to 25 by 169. So transpose 25 by 169. It means sin square x is equal to 1 minus 25 by 169. It means sin square x is equal to, take 169 as LCM. 169 minus 25. It means sin square x is equal to 144 over 169. It means that sin square x, it means sin x is equal to square root of 144 over 169. It means sin x is equal to plus minus root of 12 by 13 का whole square. Square and root cancels. It means sin x is equal to plus minus 12 by 13. Now plus का साइन आप ओमिट कर दो क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. That means sin x is equal to minus 12 by 13. तो निकला sin x. Now we can find cosec x because cosec is the inverse of sin. तो cosec x हो गया minus 13 by 12. निकला cosec भी, cos भी हमें आया, sec भी पता. अब tan और cot रह गया. Now tan x, we know that tan x is sin x by cos x. So tan x sin हमारे पास है minus 12 by 13. Minus 12 by 13 divided by cos x. Cos x is 5 by 13.
means tan x is equal to minus 12 by 13 into 13 by 5. 13 and 13 cancels. It means that tan x is equal to minus 12 by 5. So this is tan x. And now cot x. It is the inverse of tan. So minus 5 by 12. This is cot. So therefore, only sec and cos are positive, others are negative. Pause the video and note it down. Let's move to question number 5. Fifth question. Fifth question is tan x is equal to minus 5 by 12 and x lies in second quadrant. Fifth point, question 5. Tan x is minus 5 by 12 and x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. This is second quadrant. Only sine x and cosec x will be positive, others will be negative. Now tan x we know, we can find other trigonometric ratios. Use this identity, sec square x minus tan square x is equal to 1. Now we know that sec square x minus tan square x is equal to 1. Or we have sec square x minus tan is minus 5 by 12, whole square is equal to 1. Or we have sec square x plus minus 25 by 12, 25 by 144, 5 square is 25, 12 square is 144 is equal to 1. It means that sec square x is equal to 1. Transpose this, it will be plus 25 by 144. It means sec square x, take 144 as LCM, 144 plus 25. It means sec square x is equal to 169 divided by 144. It means sec square x is equal to, or sec x is equal to square root of 169 over 144. It means sec x is equal to plus minus root of 13 by 12 whole square. Square and root cancels. It means sec x is equal. Now, x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. That means only sine and cosec will be positive. Others will be negative. So here you take the minus sign, minus the value of sec x. So sec x will be minus 13 by 12. Now we know tan, we know sec. Here we can find cos. Now cos x is the inverse of sine x. So minus 12 by 13. Now cos we know, we can find sine. Now sine square x plus cos square x is equal to minus 12 by is equal to 1. Use the identity sine square x plus cos square x. So it is sine square x plus cos square x. Cos is now minus 12 by 13. It is minus 12 by 13 whole square is equal to 1. Or we have sine square x plus 144 over 169 is equal to 1. It means sine square x is equal to transpose 144 by 169. It means sine square x is equal, take 169 as LCM. It is 169 minus 144. It means sine square x is equal to 169 minus 144. It is 25 over 169. Sine square x is equal to,
और sin x is equal to root of 25 over 169. It means sin x is equal to plus minus root of 5 by 13 whole square, square and root cancels. Now it lies in the second quarter. That means sin and cosec are positive. That means you have to take a positive value of sin x. So here sin x is equal to 5 by 13. Because like it lies in the second quadrant and second quadrant में sin और cosec पॉजिटिव होंगे इसलिए sin का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ होगा. Now sin हमें पता है तो हम cosec निकालेंगे. Now, cosec x is equal to inverse of sin, it is 13 by 5. So tan we know, we can find cot. Now cot x inverse of tan x, it is minus 12 by 5. These are the 5 trigonometric ratios. You note it down. Let's move to next question. Next question is now, find the values of the trigonometric functions. It is question number 6 to 10. Question number 6 to 10, you have to find the values of trigonometric functions. Find the values of the trigonometric functions. Sixth question. It is sine 765 degree. Sine 76, 75. Seventh is cosec minus 14, 10 degree. Then eighth is tan 19 pi by 3. Ninth is sine minus 11 pi by 3. And 10 is cot 15 pi by 4. Let us move to these questions now. How to solve these trigonometric functions. The sixth is sine of 765 degree. इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक छोटा सा मैं आपको मेथड बताता हूँ. ये जो 765 है, आप इसको डिवाइड करो 180 से. किससे? 180 से. यानी जो 765 है, हमेशा इस एंगल को आप डिवाइड करिए 180 से. 180 से. So 180 4 से 4 0 are 0, 4 8 are 32, 4 1 are 4, 4 plus 3 7. तो यहाँ बचा में 45. यहाँ बचा में 45. तो यानी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा. इट इज साइन ऑफ 4 into 180, 4 into 180 plus 45. Divisor into quotient plus remainder. Divisor into quotient plus remainder. Now we know that 180 degree is also equal to pi. 180 pi के बराबर. अब इस 180 को मैं पाई में बनाऊंगा. It is sine of 4 pi plus 45. Sine of 4 pi plus 45. अब ये sin 4 pi plus 45 किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये भी मैं बताता हूं. ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा पाई बाई 2 होता है और ये हमारा 3 पाई बाई 2 होता है.
अब हमारे पास है 4 टाइम्स पाई, यानी अगर मैं 0 से स्टार्ट होऊंगा, यहां से स्टार्ट करके मैं यहां पहुंचूंगा तो ये पाई हो गया, ये 8 यहां से यहां तक पाई हो गया, लेकिन मुझे 4 टाइम्स पाई है। फिर नीचे जाऊंगा एक बार, फिर तो ये हो गया 2 बार पाई, इट इज 2 टाइम्स पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई, 2 टाइम्स पाई। लेकिन 4 टाइम्स पाई, फिर मैं यहां से जाऊंगा, यहां से हो गया 3 टाइम्स पाई, फिर यहां से जाऊंगा, हो गया 4 टाइम्स पाई प्लस 45। अगर मैं इसको 4 टाइम्स पाई का 45 ऐड करूंगा तो वो ये हो गया, तो ये 45 का एंगल 4 पर ये मुझे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब भी हमें यहाँ पाई का वैल्यू होगा, पाई बाई 2 के बगैर कुछ भी होगा, तो कोई कन्वर्शन नहीं होती है, ये सेम ही रहता है। सो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन 45, क्योंकि यहाँ 4 पाई है, जब भी पाई होता है कोई कन्वर्शन नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाता है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 किसके बराबर होता है, आई थिंक इट इज 1/√2, so it means sine of 765 degree is 1/√2। समझ आया क्या है कि 765 डिग्री, फर्स्ट मैंने इसको बोला, इसको 180 से डिवाइड कर दो, तो 4 से होगा 720, यहां बचा मुझे 45। अब ये क्या होगा, ये हो गया साइन 765 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 प्लस 45 प्लस 45। अब ये 180, ये मुझे पता है ये पाई होता है, 180 पाई के होता है, तो ये हो गया 4 पाई प्लस 45। अगर मैं इस 4 पाई प्लस 45 को देखूंगा, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो यानी तमाम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगे, कोई वैल्यू नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब साइन 45, अब ये साइन 4 पाई, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी हमें यहाँ किसी भी मल्टीप्लाई पाई आएगा, कोई भी मल्टीप्लाई पाई आएगा, तो कन्वर्शन नहीं होती है, कन्वर्शन नहीं होगी, वो सेम फिर हमें वापस ही मिलेगा, तो इट विल बी साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, so that means sin 65 is 1/√2। Next is now, pause the video and note it down. Next is now cosec minus 1410 degree। 7 cosec minus 1410 degree। अब यहां रखो यार, मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले ही वीडियो में, कि कौन से फंक्शंस इवन है और कौन सी फंक्शंस ऑड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक आप ऑन कीजिए और इसको देखिए कि कौन सा वैल्यू, कौन सी फंक्शंस इवन होती है, कौन सी ऑड। मैंने आपको बताया है, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसमें सिर्फ 2 फंक्शंस इवन होती है, कॉस और सेक, कॉस और सेक, यानी ये इवन फंक्शंस है। यानी अगर इनके साथ माइनस आएगा, वो माइनस हमेशा प्लस बन जाता है, वो खत्म हो जाता है। इनके साथ अगर भी कभी माइनस आया तो वो माइनस क्या बनेगा, प्लस। बाकी अगर किसी फंक्शन के साथ माइनस आया तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो माइनस है ये बाहर आएगा, ये प्लस तो बनेगा ही नहीं, ये यहाँ आ जाएगा, माइनस कोसेक 1410, यानी मैंने माइनस को बाहर निकाला, बाकी आता है। अब ये जो 1410 है, इसको आप डिवाइड करिए 180 से, 1410 डिवाइडेड बाई 180, तो किससे होगा, तो देखते हैं, 8 से होगा, 8 0 0, 8 8 64, 8 1 8, 8 और 6 हो गया 40, ये तो ज्यादा आ गया, ये तो 1440 आ गया। अब इस 1440 से मैं 1410 निकाल दूंगा तो मुझे 30 आया, क्या आया 30, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज माइनस कोसेक, माइनस कोसेक 8 इंटू 180, 8 इंटू 180, लेकिन यहाँ प्लस 30 की जगह मैं माइनस 30 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे माइनस 30 आए, माइनस 30, क्योंकि जब मैं 8 और 180 को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 440 आएगा। अब इस 440 से मैं जब 1410 निकालूंगा
तो मुझे 13 बचेगा, इसलिए यहाँ -30 होगा। क्या होगा? -30। चलो देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में होगा। लेट अस सी इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई। ये 0, ये पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, 8 टाइम्स पाई, यानी पाई 8 बार हो गया। एक बार यहाँ से 0 से पाई तक हो गया एक बार, हो गया दूसरी बार, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8। तो ये 0 पर आया 8, लेकिन -30 यहाँ जाएगा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। दिस विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो आई कैन राइट इट माइनस कोसेक 8 pi, 8 180 is pi, minus 30 degree. It lies in the fourth quadrant. That means only two values will be positive. That means only sec and cos. Sec and cos will be positive. Others will be negative. So it is minus times cosec of, तो माइनस वैल्यू होगा -30 डिग्री। अब इस माइनस को मैं यहां ले आऊंगा, इट इज माइनस ऑफ माइनस cosec 30 degree. Minus minus is plus. It is cosec 30 degree. And value of cosec 30, sin 30 is 1 by 2, cosec 30 is 2 by 1. It is cosec 30 is equal to 2. So that means cosec of minus 1410 is equal to 2. Pause the video and note it down. Let us move to question number 8. Eighth question. 10 19 pi by 3. अब यहाँ क्या करोगे? तो इसको मैं लिखूंगा 10 ऑफ 19 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी। डिवाइड 19 by 3, 19 by 3, 3 6 is 18, ये हो गया 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 plus 1 by 3, 6 plus 1 by 3. So I can write it 6 plus 1 by 3 into pi. अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करूंगा मुझे फिर 19 आएगा। 3 6 is 18, 18 plus 1 19, फिर आया 19 by 3 into pi. So it is 10 of 6 pi plus pi by 3. 6 pi plus pi only. फिर यहाँ मुझे पाई का वैल्यू आया, तो ये कन्वर्ट तो होगा ही नहीं। सो इट इज 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। अब देखता हूँ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। 0 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। इट इज 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 6 पाई यानी 0 से स्टार्ट होगा पाई तक एक बार, हो गया दूसरी बार, फिर यहाँ से तीसरी बार, फिर यहाँ से चौथी बार, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ एंड प्लस पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 हो गया 60। तो इसमें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी हर एक वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इट इज 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 मींस आई थिंक 10 ऑफ 60 डिग्री एंड 10 60 आई थिंक इज √3। 10 60 का वैल्यू होता है √3। Note it down. Let's move to question number 9. Ninth question is sine of minus 11 pi by 3. तो ये माइनस को यहाँ ले आओ, इट इज माइनस साइन 11 pi by 3. डिवाइड 11 by 3, तो 3 4 is 12, तो यहाँ बचा -1। क्या बचा? -1। यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब देखो ये जो 11 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मैं कर सकता हूँ 3 3 is 9, तो मुझे 2 बचा। लेकिन जब आप यहाँ कन्वर्शन करते हो तो हमेशा याद रखो ये रिमाइंडर कभी 2 नहीं आना चाहिए, नेवर। ये रिमाइंडर हमेशा 1 आना चाहिए।
जब भी आप यहाँ कन्वर्शन करोगे, डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 के बगैर कुछ और आया रिमाइंडर तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमेशा याद रखो 1 रिमाइंडर आना चाहिए, चाहे -1 आया है या +1 आया, लेकिन 1 ही आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ 3 4 किया, 3 4 12, ताकि रिमाइंडर मुझे 1 मिल जाए, अदरवाइज मुझे रिमाइंडर 2 मिलेगा। इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। हमेशा जब ऐसे क्वेश्चंस करोगे जिसमें हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा -1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ इसलिए मैंने 3 को 3 से नहीं किया, 3 3 9, क्योंकि रिमाइंडर 2 आता है, इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए, इसलिए मैंने 4 से किया, 3 4 12। अब मुझे रिमाइंडर 1 आया, लेकिन आया -1। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस साइन 11 पाई बाई 3, इसको मैं लिखूंगा 4 माइनस 1 बाई 3, 4 माइनस 1 बाई 3। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा मुझे फिर 11 बाई 3 आएगा। अब देखो ऐसे 3 को मैंने एलसीएम लिया, 3 4 12, 12 माइनस 1 इट्स 11 बाई 3। क्लियर, समझ आया ना? तो 11 बाई 3 इसको मैं लिखूंगा 4 माइनस 1 बाई 3 इंटू पाई, इट इज माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2। देखो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4 टाइम्स पाई, यानी 4 बार पाई। तो 0 से स्टार्ट हुआ, पाई तक हो गया एक बार, पाई से हुआ यहाँ तक 0 तक हो गया दूसरी बार, ये हो गया तीसरी बार, और ये हो गया चौथी बार, हो गया 4 पाई माइनस पाई बाई 3। यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 60 डिग्री, वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तब सिर्फ साइन कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव ही होगा। तो ये साइन का वैल्यू अब नेगेटिव होगा, सो इट इज माइनस साइन साइन पाई बाई पाई 4 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी पाई का वैल्यू है तो कन्वर्शन होगी ही नहीं, तो ये हो गया साइन माइनस पाई बाई 3, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस ही होगा। तो इस माइनस को मैं इधर ले आऊंगा, इट इज माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस और माइनस प्लस, इट इज साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60, साइन 60 it is root 3 by 2, sin 60, value of sin 60 is root 3 by 2. I hope you understand. The next question is now last question of this exercise. Now the 10th question is cot of minus 15 by 4 pi। तो cot है तो माइनस का साइन पहले ले आओ, इट इज माइनस cot 15 by 4 pi। तो 15 को 4 से करो डिवाइड, मैंने आपको अभी बताया जब भी हम डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो बताइए कैसे करेंगे। 3 से करूंगा तो 12, मुझे रिमाइंडर 3 आएगा तो करूंगा ही नहीं। तो 4 से करूंगा 16, मुझे रिमाइंडर -1 आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 15 को आप लिखूंगा 4 माइनस 1 बाई 4, बिकॉज 4 4 is 16, 16 माइनस 1 is 15, 15 बाई 4 फिर आया मुझे वही। इट इज माइनस कॉट 4 माइनस 1 बाई 4 पाई, so it is minus times cot 4 pi minus 1 by 4 minus pi by 4, 4 pi minus pi by 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये। अब देखिए इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 एंड पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, 0 से पाई एक बार, दूसरी बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम माइनस पाई बाई 4, वो हो गया ये, यहाँ मैंने माइनस पाई बाई 4 कर दिया। इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सो इट इज माइनस टाइम्स कॉट माइनस पाई बाई 4, इस माइनस को इधर ले आओ, माइनस टाइम्स माइनस कॉट पाई बाई 4
minus minus plus, which is cot pi by 4. Cot pi by 4 means cot 45 degree. And I know that cot 45 is 1. This is the exercise 3.2. So I hope you may have understood all the concepts of this exercise. So thank you. Have a good day.